Hello everyone. This is Devang Ganguly and welcome to another video of MBA Talks. In this video, मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगा that is going to be your biggest concern in the first year of your MBA, summer internships. So this video is suggested by Agam Jain in the comment section. So if you want to know anything, if you want me to make any video of your choice, then do let me know in the comments. I'll be happy to come up with a video that is going to be helpful for you. This is going to be a three-part series video. The first part I'll be talking about internship. I'll give you a brief basic idea about internship, what internships are generally and how you can decide which companies to go for. In the second part of the video, I'll be talking about the process of internship, how to prepare yourself for the interviews, how to prepare yourself for the summer placements, and in the third part of the video, I'll be talking about a few things that you need to keep in your mind while you are doing your internship. So while the first two part of the video is going to be focused on your pre-internship time, going to be focused on getting you to an internship, the third part of the video will be useful to you when you are doing your internship. So without wasting any more time, let's get started with the video. So summer internship usually starts after the first trimester is done. So your MBA curriculum will be divided into 6 trimesters. In the first year, you will be having 3 trimester, and after your first trimester, the companies will start coming for their summer's placement. Why after first trimester? Because they want you to have some basic knowledge about businesses, about the particular disciplines that actually are there in business, like marketing, like HR, like operations, finance. They want you to have some basic knowledge about all the discipline before you even start applying for summers. जॉब से पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है, विच इज़ बाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सिखाया जाता है, उसके बाद प्लेसमेंट शुरू होती है. देर आर कॉलेजेस जहाँ पे डे 0 और डे 1 प्लेसमेंट्स होती है, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट हैपन इन दी फर्स्ट 2 days of the summer placement season. And in case your college does not have those days, then the summer placement is going to last your entire second and third trimester. And if you are someone who is not placed in the first 2 days or in the first few companies that come to your college, you may feel demotivated, you may feel bogged down, and let's be honest, everyone faces that. Everyone who cannot get placed in the first few companies in the first 2 days. I was one of them, and it happened with me as well. It really is a bad feeling, and you feel like you're not worth enough. But trust me, there are good companies, there are opportunities that will be coming for you throughout the placement season. So you never know, the last company that comes may be the company where you will get the best experience, best knowledge and the best opportunities to grow your career. So हिम्मत मत खोना, prepare करते रहो, and every interview that you appear for, every company that you appear for, stay motivated, stay hungry, be best prepared and appear in those interviews. The second thing that you need to know about internship is that internships are a way of applying your theoretical knowledge जो भी आप फर्स्ट ईयर में सीखते हो into the real world businesses. You will be having a key role in the businesses, in the companies that you join. आप देखोगे कि जो भी आप केस स्टडीज पढ़ते थे, जो भी आपने केस स्टडीज पढ़ा है, जो भी आपने थ्योरी सीखा है, वो आप अप्लाई करोगे रियल लाइफ में. When you go for an internship, try to use as much as theory possible. Try to test all the theories that you have learned, all the knowledge that you have learned. And when you are able to do those successfully, आप देखोगे कि your confidence is boosted, your morale is boosted. You are able to be much more sure about your knowledge. You have done something that is worth writing in your CV. You have impacted a business. You will know that you are an important person and you can achieve something, and that is something that is going to help you a lot in your career. So अगर कंपनी जॉब रोल और आप क्लिक कर जाओ, that is going to be the best thing. उससे अच्छा कुछ नहीं होगा. And the last thing that I want you all to remember is that jobs are given in a particular discipline. मार्केटिंग हो सकता है, फिनेंस हो सकता है, ऑप्स हो सकता है, HR हो सकता है. अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद डिसाइड कर लिया है, या MBA में आने से पहले आपने डिसाइड कर लिया है कि आई वांट टू डू मार्केटिंग ओनली, आई वांट टू डू HR ओनली, यू हैव डिसाइडेड योर डिसिप्लिन, देन फाइन, देन यू नीड टू सिट फॉर द कंपनीज दैट आर ऑफरिंग दैट पर्टिकुलर जॉब रोल वेर यू वांट टू वर्क. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अपियरिंग फॉर अदर डिसिप्लिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज. क्योंकि अगर गलत जगह पे प्लेसमेंट लग गई, जो जिस काम में आपको इंटरेस्ट है नहीं, जिस काम में आप ग्रो नहीं करना चाहते हो, बट आपकी जॉब लग गई, तो प्लेसमेंट कमेटी वाले कहीं और बैठने नहीं देंगे. दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू. हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन योर नॉलेज, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन. यू आर गोइंग टू गेट प्लेस्ड इन द जॉब रोल दैट यू वांट टू ग्रो योर करियर इन.
एंड इफ़ यू हैव नॉट डिसाइडेड कि करना क्या है, मेरे को मार्केटिंग जाना है या फिनांस जाना है, मैंने डिसाइड किया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। इन दैट केस यू आर मच मोर ओपन माइंडेड एंड यू आर मच मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप कहीं भी बैठ सकते हो। एंड इफ़ यू फील दैट मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, जहाँ पे इंटर्नशिप मेरी लगी है, जो काम मुझे दिया जा रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग वॉट आई वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर, देन फाइनल प्लेसमेंट में यू विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड, यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये करना है, एंड यू विल बी अ बेटर डिसीजन मेकर इन द सेकेंड ईयर। इंटर्नशिप में जॉब रोल को लेके सीरियस बनो, चूज योर करियर, चूज योर पाथ करेक्टली, चूज योर डिसिप्लिन करेक्टली, नो वॉट यू वॉन्ट, एंड इफ यू डोंट नो, internship is the time where you need to experiment, experience and learn, and then decide in the second year of your MBA. There is nothing harm in changing your trade in the final year. इंटरव्यूज में आज के पहले आपने फिनेंस का काम किया तो अभी मार्केटिंग के रोल के लिए क्यों बैठे हो, यू कैन ऑलवेज टेल दैट आई फाउंड माई कॉलिंग इन द सेकेंड ईयर, आई फाउंड माई कॉलिंग व्हेन आई वाज डूइंग my finance internship, and I realized that finance is not for me. I want to be much more the front end of the company. I want to be much more into the branding in activities, into the market research activities, which is why मैं marketing करना चाहता हूँ. So you can always have a convincing answer if you are sure about yourself. और वो श्योरिटी तभी आएगी जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी. सो इफ यू आर डिसाइडेड और यू आर नॉट डिसाइडेड डज नॉट मैटर. इफ यू आर डिसाइडेड वेल एंड गुड, यू विल स्टे फोकस्ड, एंड इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड, you are open to experimentation, and that is also good. So whatever your case may be, don't get confused looking at others. Do not have fear of missing out. Do not think that you are staying behind because other people already know their shit and you don't. Do not have any such feeling because you have got into a very good preschool and you have learned something, so you are worthy and you can do great things in your life. And the last thing I want you to know is that you will be confused. वो confusion रहेगा ही, whether to go for the placement package or to go for दी जॉब रोल. हो सकता है कि जो जॉब रोल आपको चाहिए वो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड उसमें कम है, और जो जॉब रोल आपको नहीं चाहिए उसमें पैसा ज़्यादा है. सो व्हाट शुड यू डू? आई वुड से, अगर आप डिसाइडेड हो कि इसी करियर में मेरे को जाना है, मुझे यही करना है लाइफ टाइम, देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द लोअर स्टाइपेंड, बिकॉज इंटर्नशिप 2 महीने का है, उसमें 1.5 लाख 2 लाख कमा के क्या ही करोगे अगर फ्यूचर में वो काम नहीं करना है तुमको. अगर एक्सपीरियंस खराब क्यों करना? So ignore the stipend. If you have it, good. If you do not have, remember that if you stay focused in the career of your choice, you are going to have loads and loads of money when you get a job in the second year. So look at the larger picture, look at what you want to do, and stipend is a very minor thing in summer placement. इंटर्नशिप में ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म करियर को जेओपार्डाइज मत करो. दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से टू यू ऑल. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. आई होप यू got motivated. I hope you got a clear picture about what internship is, what you can expect from internship. And if you like this video, then do hit the like button. That is going to be helpful for my video, and share this video with as many people as you want, and comment down below if you have any topic in mind. I'll be coming up with the second and third part of the video soon, and if the video is already released, it will be somewhere here. See you in that video. Take care. Bye bye.